Lateral thinking. Why is it called such? The term was invented by Mr. Bono. Now, you can see that you cannot dig a hole in a different place by digging the same hole deeper. है ना? हम कुआं खोद रहे हैं तेल ढूंढने के लिए और 10-100 मीटर तक खोद लिया और यहाँ अब आपको दूसरी जगह पर खोदना है तो उसी होल को डीपर करने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट? यू कैन नॉट डिग अ होल इन अ न्यू प्लेस बाय डिगिंग द सेम वन डीपर. दिस इज वर्टिकल थिंकिंग एंड दिस इज द मिथ ऑफ और दिस इज द सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी कि हमें लगता है कि हार्डवर्क विल प्ले ऑफ एवरीथिंग, राइट? हमें लगता है ना, हम बोलते हैं कि एसेंशियली हार्डवर्क विल पे ऑफ. लेकिन इफ यू आर डूइंग हार्डवर्क इन द रॉन्ग डायरेक्शन इट मे नॉट, राइट? इट विल वेस्ट योर टाइम. तो वर्टिकल थिंकिंग क्या है? वर्टिकल थिंकिंग इज टेकिंग अ पोजीशन एंड सीकिंग टू बिल्ड ऑन दैट बेसिस. यू कैन सी इन द डायग्राम कि यू इधर स्टेप, जैसे आप एरोज देखते हैं तो दो पहाड़ हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो इस तरह से आप बिल्ड करते हैं थिंकिंग में. यू गो डीपर एंड देन यू गो डीपर एंड यू गो डीपर. Okay, now don't get me wrong. It's not that vertical thinking is bad or it is not useful. It is useful for various places where you need to definitely dig deeper into a problem and find that way. But then because of this habit, we have lost to look at lateral ways of like digging a hole into another place. Okay. अब lateral thinking के definitions देखेंगे. So ये this is the patterns of perception जो हमने पहले देखा कि ब्रेन में pathways बनते हैं और वर्ल्ड आउटसाइड, you see in the diagram, वर्ल्ड से परसेप्शन आता है, यानी कि इमेजेस आते हैं आईज में, हम देखते हैं, आवाजें आते हैं, टच सेंसरी हम फील करते हैं. तो ये सारा एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया से पैटर्न के थ्रू अंदर जाता है ब्रेन में. आप देखेंगे कि कैचमेंट एरिया इज बिग एंड पैटर्न्स आर वेरी लीन. once it enters into the pattern it will just repeat the fixed set of behavior from your brain will activate that routine or pattern or habit और वो exactly वैसा experience होगा आपको, although there is a minor difference or so there is a large catchment area. This is the logic of self-organizing information systems. This is how brains would work. Now, lateral thinking की क्यों जरूरत होती है? Because you have to break these patterns, as we saw repeatedly with various examples. We saw with humor, we saw with other examples. तो क्या lateral में क्या होता है? Going sideways to try different perceptions, point of entries to get us out of the usual line of thought. Points of view. Now, let's say there is a building. आप जाके बिल्डिंग, आपको किसी ने बोला कि ये बिल्डिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आओ और आप जाकर के बिल्डिंग के फ्रंट से आपने एक फोटो ले लिया और आपने जाके वो बंदे को दे दिया. इज दैट द ओनली व्यू ऑफ द बिल्डिंग? think of a building like Pentagon or think of a building like White House or think of a building like Gateway of India or any other building for that matter, because every building is in 3D, right? और आपने एक फोटो ले लिया, that may not be sufficient. Now think of another person who walks around the building and take photographs from different angles, all of which are equally valid. So this is the point of view. क्या होता है typically हम एक ही एंगल से देखते हैं and then we mix our ego with our thought and then we don't want to change and then we don't see other angles. So it's like lateral thinking is also like point of view. You walk around the building and you look at the building from different angles, which may be completely different. हो सकता है पीछे का बिल्डिंग पूरा जला हुआ हो, आग लग गई थी और पीछे का पोर्शन जल गया था और आप आगे का फोटो लेके आ गए. It looks like a White House, but पीछे से आपने देखा तो it's like you know what it is. It's like basically debris. So it can happen, right? तो इसीलिए lateral thinking is important. तो हमें लगता है generally in any given situation we have one idea and that is sufficient, but then we are wrong because there are techniques who will make you look at that same problem from different angles. ठीक है? So this is a beautiful concept. Now let's see what is logic bubble. तो अभी लॉजिक बबल तो पीछे हमने देखा था उस बॉक्स को, बट रॉक और वाटर लॉजिक क्या होता है हम देखते हैं. रॉक और वाटर लॉजिक होता है कि आप, रॉक इज हार्ड लॉजिक, you don't want to change. Water is soft logic, where it's like perception. So some keywords are given here. A rock plus a rock is two rocks. But with water, you mix two glasses of water, you just get water, right? You don't get two glasses separately. It mixes and merges with each other. The boundaries are static versus fluid, and hard edge and soft and fuzzy edge again. So our perceptions, the brain neural pathways are the water logic kind, not the rock logic kind. Okay? So that is rock or water logic. Design and analysis. Now let's see this another key aspect. So design and analysis. Design बहुत कम लोगों को समझ में आता है. अभी अभी ये हुआ है कि डिजाइन थिंकिंग वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एनालिसिस सबको पता है. एनालिसिस इज ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम. इट्स अ कॉमन वर्ड, इट्स अ प्रीवियस हिस्ट्री वर्ड, राइट? मतलब जनरली हम एनालाइज करते हैं बस हर चीज. दैट इज हाउ आवर ब्रेन इज डिजाइन. ब्रेन इज डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. एवरीबॉडी वांट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. बट एनालिसिस में क्या होता है? व्हाट इज पूछते हैं आप हमेशा. एक मैटर आपको एनालाइज करने को दिया गया, आप फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज इन द मैटर. आप पूरा उसको चीर फाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं. दैट इज एनालिसिस. बट डिजाइन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. There are problems in the world, as we will see in the next slide or so, that cannot be solved by analysis. And analysis is the only kind of thinking that we learn in schools also. We are given a problem and we are asked to analyze the problem. But we are never given design problems in school, which is really the sad part, where we have some opportunities, where we can think of opportunities. So design thinking is not being taught.
It is very rare, it is very recent that people are getting interested in such kind of thing. ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? जब स्टैंडर्ड रूटीन नहीं इनफ होता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप सॉल्व नहीं कर सकते. जैसे मैंने बताया, यू हैव टू डिजाइन अ वे फॉरवर्ड because there are so much problems where we cannot find the cause, or there are so many causes we cannot eliminate, like world level problems, for example pollution in the world. Now pollution is not a problem that you will solve by doing B instead of A. It's a bigger problem, right? Hundreds of causes of pollution and hundreds of billions of people are being affected by. It's not a simple problem that you can solve just by analysis. All the analysis available, Mr. Prime Minister and Mr. Government, people have all the reports that can be available from weather stations and from factories and everything, but still a solution cannot be reached as easy as it seems. Problems of the world, like corruption, for example. So these are heavy things where there are so many causes we cannot eliminate. So in such problems, you cannot just problem solve it, right? You have to design. Okay. Now also remember that it is the poetry of speculation that makes a scientist great versus being just good. So there have been millions and thousands of scientists who were also great, who are also good. But what makes a scientist really great is the poetry of speculation. He tries, he proposes parallel hypothesis. He suggests parallel thing, mold fitting versus create. Okay. Uses of creativity. ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना काम का होता है creativity, because you can everywhere you can apply it. You can apply it in commerce and improvement of the world. You can apply it for world problems. You can apply it for commerce in the sense business. You can shape new ideas. You can then value an opportunity. You can suddenly see value. You can increase value of existing products. You can create opportunity for the future. There is future, there is innovation, there is motivation, and there is lifting of higher purpose. नहीं तो कोई बोलेगा creativity क्यों चाहिए? तो इसलिए भी चाहिए because you are not making the best use of what you have. किसी के पास कोई वॉन्ड है या और कोई एंटीक फर्नीचर है और उसको अगर आप हथौड़ा मारने के लिए यूज करते हो, नेल पे ठोकने के लिए उसको यूज करते हो, राइट? तो यू आर नॉट यूजिंग इट to its higher purpose. So creativity is also required to understand what is the best use of something or how to redesign something. So uses are everywhere, definitely, and I think we are almost there. Yes, we are there.